welcome back to my channel. I hope everyone is doing awesome. Before getting to the video, I really want to apologize अगर पीछे से कोई भी background noise आ रही है because आसपास किसी के घर में कोई construction का काम चल रहा है. Because of that continuous noise आ रही है. I've been waiting for 2 hours कि ये थोड़ा सा कम हो जाए so I can start filming the video, but it's just not getting over. Anyway, I wanted to do an outfit class in the longest time. Like I love watching these videos. It's also interesting. Like the entire concept is really interesting to me. you guys know मेरी बहन की शादी थी and as soon as the शादी got finalized, I was pretty damn sure कि मुझे एक outfit तो खुद से stitch करवाना ही है. Like I wasn't sure if I want like a lehenga or a garara or a sharara or I want like a normal anarkali or what I want, but I was pretty sure कि मुझे एक outfit तो stitch करवाना ही है and that too has to be black in color. So obviously naturally I went on to Pinterest to find some black Indian outfit inspirations. This is the outfit जिस पे मेरा literally दिल आ गया था. I was like, Oh my god, this looks so freaking pretty. I mean, obviously, I did not want an exact same outfit, but जो इसकी sleeves थी and the neckline, it looked extremely pretty. And I knew I wanted a lehenga with a V neckline and full sleeves. So the next step was that I called up the tailor. Now this is the same tailor जिससे मेरी मम्मी काफ़ी बार outfit stitch कराती है. मेरी बहन के शादी के almost सारे outfits इन्हीं ने stitch किए थे. I'm gonna put, of course, the name of the shop and the address and everything in the description box down below. I sent her the photo. I told her कि मुझे कुछ black लहंगा ऐसा सा सिलवाना है and I want कि लहंगे में बहुत ज़्यादा घेरा हो. Like अगर मैं twirl करूँ, it should be like पूरा ऐसा घेरा आना चाहिए and full sleeves होनी चाहिए and it should be heavy लहंगा. बुटीक वाली आंटीज का काम ही होता है कि वो खुद से मटेरियल लाके दे stitch and everything. So I told her कि नहीं मुझे खुद से जाना है. So she told me कि लाजपत नगर में you can get like really good quality fabric which is heavy also. Okay, so naturally the next stop was लाजपत नगर market. मैं अपनी बहन के साथ गई थी because उस दिन मम्मी को भी थोड़ा सा काम था. She had to go somewhere. So life में मैंने और मेरी बहन ने कभी fabric shopping नहीं की है, mind you. We went to a bunch of fabric shops और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था. And I was like almost on the verge of giving up when I came across this one shop which had really pretty collection. I found this really pretty combination of 3 fabrics of sequins which looked stunning, and when I tried it on, oh my god, I can't even tell you, मैं एक सेकेंड में I was like कि यही फाइनल है. I don't want to look at anything else. Now mind you कि मेरे को शादी पर्पस से चाहिए था, like अपने घर की शादी के पर्पस से चाहिए था and I wanted बहुत ज़्यादा घेरा हो. I wanted कि बहुत ज़्यादा घेरा हो. I wanted heavy हो outfit पूरा का पूरा. That is why the fabric that I chose or I liked was very expensive. Like it was expensive, I'm not gonna lie. Saying that, I'm just gonna tell you guys the cost of the entire fabric. Now since I wanted कि skirt मेरा पूरा बहुत ज़्यादा घेरे वाला हो, so I opted for 9 meters of fabric and उसका cost was 835 rupees per meter, which comes down to 7515. Then चोली वाला जो fabric था, I got 2.75 meters and the cost of that particular fabric was 795 rupees per meter, which is 2186 rupees. And then for dupatta only 2 meters was required, and the fabric that I liked was 895 rupees per meter, which comes down to 1790. So the entire cost of the fabric itself was 11,491, which I know is extremely expensive for fabric, but like this particular picture, like इस picture में जो fabric लगा हुआ है, like the kind of fabric, it's thread work and everything, I saw exactly same fabric on the shop and that was I think for around 300 or 330 rupees per meter. So of course you can get cheaper alternatives, but मुझे heavy चाहिए था. That is why I had to go ahead and buy such expensive fabric. After selecting the fabric, we came home and immediately went to the tailor. I gave her the fabric, I gave her my measurements, and then I told her, आंटी मुझे थोड़ा सा घेरा ज़्यादा चाहिए तो आप कैन भी लगा देना. And along with that of course मुझे कुछ ऐसा बहुत ही pretty सा लेस लगाना था क्योंकि तीनों फैब्रिक जो थे they had a very different vibe going on. So I wanted कि कोई एक मैं लेस लगा दूँ जिससे कि पूरा outfit sort of comes together and looks even prettier. So I selected a lace. So she told me the charges, like along with the lace, the can, the stitching charges, the dyeing charges, and I think lining लगाने का charges, सब कुछ मिला के she quoted 7,000 rupees, which was I mean I'm still not sure if it's expensive or not expensive because it was my first time getting an outfit still. मैं outfit लेने जा रही हूँ. निहारिका is with me. Say hi. हाँ तो बेसिकली वी विल बी गोइंग बट आज 10th है. इट्स अराउंड 7:30 से ऊपर ही हो चुका है ऑनेस्टली. एंड मुझे आउटफिट 14th को पहनना है. मेरे को इतना ज़्यादा सुबह से आई थिंक मैं 4-5 बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि अगर आउटफिट ठीक नहीं बना then I have nothing to wear. So I entered the boutique and आंटी ने मुझे directly she sent me to the trial room कि outfit वहीं पे रखा हुआ है. I saw the outfit and it looked so freaking pretty, but I just wanted to try it and ऐसे पहले से excited नहीं होते तो मैंने try किया and
the fit was, oh my god, the fit was so freaking perfect. And then I looked myself in the mirror. It looked so freaking pretty. I'm not even kidding. मतलब जो लेस मैंने स्पेशली सेलेक्ट की थी उसने आउटफिट में जैसे 4 चांदी लगा दिए थे. आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई वाज लाइक ओ माई गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव ये आउटफिट मैंने खुद से डिज़ाइन किया है, ये सेलेक्ट किया है, फैब्रिक एंड एवरीथिंग. आई डिड रियलाइज़ कि ये पर्टिकुलर आउटफिट कुछ ज़्यादा ही झटैक हो गया है फॉर दिन का फंक्शन, बिकॉज इनिशियली मुझे एंगेजमेंट विच इज़ सपोज टू बी दिन का फंक्शन, मुझे उसके लिए ये पर्टिकुलर आउटफिट स्टिच कराना था. बट देन आई रियलाइज कि दिन के लिए तो कुछ ज़्यादा ही झटैक हो गया है. सो आई हैड अनदर फंक्शन, लाइक वी हैड अनदर फंक्शन जो रात का था, विच वॉज ऑफकोर्स संगीत. उसका आउटफिट सिलेक्टेड था, तो मैंने बस स्वॉप कर दिए दोनों आउटफिट्स एंड इट मेड अ लॉट मोर सेंस. संगीत के लिए इट वॉज अ परफेक्ट मैच. Anyway, let's do the final reveal, shall we? Drum rolls, please. So this is the final look. I wore it for the Sangeet function क्योंकि outfit काफ़ी blingy and out there था. So I wanted to keep the makeup and the jewelry and other accessories very basic. So I did a subtle brown smoky eye with brown lipstick and everything. And for the jewelry, I only opted for big silver jhumkas. I feel that the makeup and the jewelries totally matched the vibe of the lehenga. Love how the entire outfit turned out, especially the घेरा. Like जब मैं twirl कर रही थी, इतना ज़्यादा ड्रामेटिक लुक आ रहा था, लाइक जैसे मूवीज़ में होता है. एंड इट लुक्स सो फ्रिकिंग प्रिटी, आई जस्ट कांट टेल यू. टॉकिंग अबाउट द चोली, इट हैड द परफेक्ट वी नेक लाइन. पॉइंट जो मैंने आंटी को बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे डीप वी नेक लाइन चाहिए पीछे से, एंड आई वॉन्टेड टू बी लाइक ऑलमोस्ट बैकलेस. एंड शी डिड अ फैब जॉब विद इट. मतलब पीछे सिर्फ 1 या 2 इंच का स्ट्रैप था, अदर देन दैट इट वॉज ऑलमोस्ट बैकलेस. एंड आगे से भी काफ़ी अच्छी हाइट थी, मतलब एवरीथिंग वॉज प्रॉपरली सिक्योर्ड. मैंने पैड्स वगैरह भी आंटी से लगवाए थे. सो एवरीथिंग वॉज इन प्लेस. मुझे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ. एंड ऑल्सो आई danced, I was running around, I was dancing and everything, but everything right here was just in place. Now this was my personal choice that I wanted कि मेरा जो outfit है थोड़ा सा heavy हो. I wanted कि उसमें बहुत सारा घेरा हो. I wanted कि heavy sequence वाला work हो and full sleeves का blouse हो, because of which I had to get a lot of fabric and the entire outfit costed me around 18 to 19,000 rupees. But आप आराम से simple sequence work वाला fabric लाके, even thread work वाला fabric लाके easily ये लहंगा 5 to 7,000 की रेंज में बनवा सकते हो, which would be pretty damn amazing and even look भी similar kind अचीव कर सकते हो. Well, that is it for this video. Please do not bash me in the comment section regarding the budget. मेरी बहन की शादी थी, that is why I wanted to get something heavy made, and also the fact कि 2022 में there are a lot of weddings and functions coming up, तो मैं पूरा use इस outfit का निकाल लूँगी उस time पे. Anyway, I'm also gonna make like a super affordable alternative of outfits from scratch very soon, so stay tuned for that, and I'm gonna see you guys very soon. Bye.